उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। खबर दें आपको, लाहौर में किसानों का एहतजाज में इंतजामिया ने ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लाहौर में पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन चला दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुल्तान रोड से मुंतशिर कर दिया। मुतादिद किसान जख्मी हो गए, बेशतर गिरफ्तार कर लिए गए। हम पर हुकूमत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है, ऐसा कहा गया। सदर किसान इत्तेहाद की जानिब से मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। लाहौर में किसानों के एहतजाज में इंतजामिया ने ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लाहौर में पुलिस ने मुजाहिरीन पर वाटर कैनन जला दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुल्तान रोड से मुंतशिर कर दिया। मुताद्दिद किसान जख्मी जबकि बेशतर को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर किसान इत्तेहाद का कहना है कि हम पर हुकूमत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाब के बाद वोटों की गिनती जारी है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक सबकत हासिल है। अमरीकी नेटवर्क्स के मुताबिक डेमोक्रेट ने ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत बरकरार रखी है। जो बाइडन ने 238 जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। अमेरिका की 19 रियासतों में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप को बढ़तरी हासिल है। 16 रियासतों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को बढ़तरी हासिल है, जबकि 16 रियासतों से सदारती इंतखाबात के नताइज आना बाकी हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब वोटों की गिनती और नताइज की आमद जारी। जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक सबकत हासिल। डेमोक्रेट ने उम्मीदवार नुमाइंदगान में अक्सरियत बरकरार रखी है। जो बाइडन ने 238 जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 213 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। अमेरिका की 19 रियासतों में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप को बढ़तरी हासिल है। अमेरिकी नेटवर्क्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक ने ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत बरकरार रखी है। जो बाइडन ने 238 जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब के बाद वोटों की गिनती जारी है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक सबकत हासिल है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात वोटों की गिनती जारी है। टेक्सास, कैंसास, मिजूरी, आइडाहो, यूटा ट्रंप की नाम रही। इंडियाना, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी, अलाबामा और जनूबी कैरोलिना में ट्रंप कामयाब हुए, जबकि शुमाली डकोटा, वायोमिंग, कैंटकी और मगरबी वर्जीनिया में भी ट्रंप को कामयाबी हासिल है। जबकि मोंटाना, टेनेसी, जनूबी कैरोलिना की रियासतें भी ट्रंप के नाम रही। जो बाइडन ने वाशिंगटन, वर्जीनिया, इलिनॉय, वर्मंट, मेन और न्यूयॉर्क में मैदान मार लिया, जबकि एरिगॉन, कोलोराडो, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, कैंटकी, मैरीलैंड में भी जो बाइडन जीत गए हैं। जबकि हवाई, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, मैरीलैंड, मेन, इलिनॉय की रियासतों में भी जो बाइडन के नाम रही। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने न्यू हैम्पशायर में कामयाबी हासिल की है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात वोटों की गिनती जारी। टेक्सास, कैंसास, मिजोरी, आइडाहो, यूटा ट्रंप के नाम रही। इंडियाना, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी, अलाबामा और जनूबी कैरोलिना में ट्रंप कामयाब रहे, जबकि शुमाली डकोटा, वायोमिंग, कैंटकी और मगरबी वर्जीनिया में भी ट्रंप की कामयाबी रही है। मोंटाना, टेनेसी और जनूबी कैरोलिना की रियासतें भी ट्रंप के नाम रही, जबकि जो बाइडन ने वाशिंगटन, वर्जीनिया, इलिनॉय, वर्मोंट, मेन और न्यूयॉर्क में मैदान मार लिया। ओरेगोन, कोलोराडो, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी और मैरीलैंड में भी जो बाइडन जीत गए, जबकि हवाई, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, मैरीलैंड, मेन, इलिनॉय की रियासतें भी बाइडन के नाम रही हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने न्यू हैम्पशायर में कामयाबी हासिल कर ली। सदारती इंतखाबात जीतने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अमरीकी सदारती I want to thank the First Lady, my entire family, and Vice President Pence, Mrs. Pence, for being with us all through this. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. And
We won the great state of Ohio. We won Texas. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. We're up by 2.5% or 117,000 votes with only 7% left. They're never going to catch us. They can't catch us. Likewise, we've clearly won North Carolina, where we're up 1.4% or 77,000 votes with only approximately 5% left. They can't catch us. We also, if you look and you see, Arizona, we have a lot of life in that. And somebody declared that it was a victory for, and maybe it will be. I mean, that's possible. But certainly there were a lot of votes out there that we could get, because we're now just coming into what they call Trump territory. I don't know what you call it, but these were friendly Trump voters. And that could be overturned. The gentleman that called it, I watched tonight, he said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely. And we don't even need it. We don't need that. That was just a state that if we would have gotten it, it would have been nice, Arizona. But there's a possibility, maybe even a good possibility. In fact, since I saw that originally, it's been changed and the numbers have substantially come down just in a small amount of votes. So we want that obviously to stay in play. But most importantly, we're winning Pennsylvania by a tremendous amount of votes. Think of this. We're up 690,000 votes in Pennsylvania, 690,000. These aren't even close. It's not like, oh, it's close. With 64% of the vote in, it's going to be almost impossible to catch. And we're coming into good Pennsylvania areas where they happen to like your president. I mean, it's like very good. So we'll probably expand that. We're winning Michigan, but I'll tell you, I looked at the numbers. I said, whoa. I said, wow, that's a lot. By almost 300,000 votes, and 65% of the vote is in. And we're winning Wisconsin. So we're winning. We don't need all of them. We need, because when you add Texas in, which wasn't added, I spoke with the really wonderful governor of Texas just a little while ago, and Greg Abbott, he said, congratulations. He called me to congratulate me on winning Texas. I mean, we won Texas. I don't think they finished quite the tabulation, but there's no way. And it was almost complete, but he congratulated me. Then he said, by the way, what's going on? I've never seen anything like this. Can I tell you what? Nobody has. So we won by 107,000 votes with 81% of the vote. That's Michigan. So when you take those three states in particular, and you take all of the others, I mean, we have so many, we had such a big night. You just take a look at all of these states that we've won tonight, and then you take a look at the kind of margins that we've won them by. And all of a sudden, it's not like we're up 12 votes and we have 60% left. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. And we have all these announcers saying, what happened? And then they said, oh, because you know what happened? They knew they couldn't win. So they said, let's go to court. And did I predict this, Newt? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. I said exactly, because either they were going to win, or if they didn't win, they'll take us to court. So Florida was a tremendous victory, 377,000.
Texas, as we said. Ohio, think of this. Ohio, a tremendous state, a big state. I love Ohio. We won by 8.1%, 461. Think of it. Almost 500,000 votes. North Carolina, big victory with North Carolina. And so we won there. We lead by 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you, and I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us, and Mr. Vice President, say a few words, please. Please. I want to join you in thanking more than 60 million Americans who have already cast their vote for 4 more years for President Donald Trump in the White House. And while the votes continue to be counted, we're going to remain vigilant, as the President said. The right to vote has been at the center of our democracy since the founding of this nation, and we're going to protect the integrity of the vote. But I really believe with all of my heart, with the extraordinary margins, Mr. President, that you've inspired in the states that you just described, and the way that you launched this movement across the country to make America great again, I truly do believe, as you do, that we are on the road to victory and we will make America great again. Thank you, Mr. President. Thank you very much, everybody. America great again. Thank you, Mr. President. Thank you very much, everybody. आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बोस्निया के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त बोस्निया के सदर को मेहमानों से इस्तकबाल करवा रहे हैं, मुतारिफ करवा रहे हैं। बोस्निया हर्ज़ेगोविना की प्रेसिडेंसी किसी के चेयरमैन शफीक जाफर वो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं और बोस्निया के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तमाम तर अराकीन से तारुफ करवा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म हाउस ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से काबीना अराकीन का तारुफ भी करवाया। बोस्निया के सदर इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं और बोस्निया के सदर का वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से काबीना अराकीन का तारुफ भी करवाया गया। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी और दोनों मुल्कों के एजाज़ में उस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। बोस्निया के सदर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से काबीना अराकीन का तारुफ भी करवाया गया है।
बोस्निया के सदर इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं। बोस्निया और पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात हैं। बोस्निया ने पाकिस्तान की हमेशा हर मुश्किल वक्त में मदद की है और पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान इस ताल्लुकात की बुनियाद पर ही बोस्निया के सदर इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं। बोस्निया के सदर शफीक जाफरोच ने गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको पेश किया गया है। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी दी और दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। बोस्निया के सदर शफीक जाफरोच को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बोस्निया के सदर इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अराकीन का तारुफ भी करवाया गया। बोस्निया के सदर के हमरा सफरा और ताजरों का वफ्द भी उनके हमरा है और इस वक्त वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं। बोस्निया और पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात के पेश नज़र ये दौरा किया जा रहा है और अहम फैसले भी मुतवक्के हैं।